So, hello friends, welcome back to my channel. इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को पहले बताया गया है. An operating system provides an environment for executing of programs. It makes certain services available to programs and to users of those programs. तो क्या क्या सर्विसेज हैं वो इसमें बताया. तो यहाँ पे भी आपका अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपका यूज़र है. यूज़र, दिस इज़ योर यूज़र and this is your hardware. And this portion is your operating system. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मॉड्यूल वाइज बना होता है, तो उसके अंदर भी मॉड्यूल्स हैं उसके अपने. ये आपका मॉड्यूल हुआ, ये अलग सिस्टम कॉल मॉड्यूल्स है, और ये आपका सर्विसेज जहाँ पर हैं वो मॉड्यूल है. तो ये आपकी सर्विसेज हैं, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन बिटवीन among programs, resource allocation like CPU allocation, memory allocation, like that, accounting, error detection, protection and security, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं. ये सारी सर्विसेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है यूज़र प्रोग्राम को. और यहाँ पर आप देखेंगे उसके ऊपर एक लेयर है सिस्टम कॉल. तो ये सारी सर्विसेज जो है एक सिस्टम कॉल के थ्रू यूज़र और प्रोग्राम को अवेलेबल होती है. एक तरह से ये आपका इंटरफेस है, इंटरफेस फॉर सर्विसेज. और उसके ऊपर आपका ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस हुआ, like touch screen, command line, user interface, like that. So these interface uh, connects with system call, and system calls make sure that particular requested services available to the user program. So this is the diagram for operating system services. Next, जो यहाँ पर हमारा इंटरफेस था सिस्टम कॉल, उसी को ही आगे एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज सिस्टम कॉल? सो सिस्टम कॉल, let me just change the color. Okay, so system calls provide an interface to the service made available by an operating system. These calls are generally available as a functions written in C++. तो ये सिस्टम कॉल्स आपकी आप फंक्शंस हैं एक तरह से, जो which are written in C++. Although certain low-level tasks, for example, tasks where hardware must be accessed directly, may have to be written using assembly language. सिस्टम कॉल्स के आपके एक तरह से फंक्शंस हैं, functions written
in C or C++ और कुछ functions जो जिसमें directly hardware को access किया गया है may be written in assembly language. Assembling language like move, add, store, register one, like that. Okay, next. Next is your, we have this API, application programming interface. So as you can see, even simple programs may make heavy use of operating system. Frequently, system execute thousands of system calls per seconds. Generally, जो हमारे programs होते हैं, they may execute thousands of system call per second. मतलब heavily use करते हैं system calls का to in order to access uh, operating system services. So most programmers never see this level of detail. However, typically application developers design programs according to what? Application programming interface API. The API specifies uh, functions that are available to application programmers, including the parameters that are passed to each function, return value that the programmer expect in return. तो जो सिस्टम कॉल्स की हम बात कर रहे थे पीछे, जो which are written in functions like C, इनको भी एक्सेस करने के लिए API बनी हुई है. और जो यूजर्स हैं वो डायरेक्टली सिस्टम कॉल से इंटरेक्ट नहीं करते हैं. दे interact to API, then API calls on behalf of user, the system calls, the actual function. तो सिस्टम कॉल को एक्सेस करने के लिए आपकी APIs बनी हुई है. इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है. Most common API available to application programmers are this is actually Windows API. Windows में आप देखेंगे आप मिलेगी Windows API और Linux के लिए ये API है. Programmers are, so what I was saying, that programmers do not directly access system calls. They interact with Windows APIs for particular system calls, and these APIs access the actual system calls.